know? Well, if you want something, then you should have to work hard to get it. Hi guys, this is DV and you're watching me on DV Has Boards. So DV has boards in like 44 days and today is not a very good day. I feel so sad today for some reason. I'm just not feeling like making a video but I just don't want to ruin the challenge because अगर boards तक चलाया तो चलाएंगे. And second of all, so I'm doing right now physics. उसके बाद I'll do cam एंड उसके बाद यस आज मैं यही तो करूँगी. अगर मेरे को टाइम ऐसा मिला इन सब के करने के बाद भी तो मैं आई मूव टू बायोलॉजी. थर्ड ऑफ ऑल आई एम थिंकिंग टू you know starting a challenge of waking up early for like 7-8 days regularly. Maybe it become a habit after that because I want to wake up early and I want to sleep early because I'm just ruining my sleep schedule and waking up at like 12 p.m. 11, so it's not good, right? I want to change that. So in order to change that, I will try to sleep early from tomorrow onwards. Not tomorrow actually, from today onwards, and will wake up tomorrow early because I have no time left. It's 5 Jan already. So yeah, that's my plan of the day. Day क्या अब तो evening हो गई है, 7 बज गए. So yeah, I woke up late today, so it wasn't a very productive day. And it wasn't a very study day. So yeah, see you after my physics work. Dio me the chai break. It's just chef's kiss, bro. It's so good. I have bhune hue makhani. I have garam chai and my studies. Times when your father gets something on every new year, like a diary and a calendar, and instead of him, their kids use that, right? So that's what I am going to do. I love diaries, to be honest. I have like a huge diary collection. Huge in the sense बहुत सारी डायरीज है मेरे पास. Like it's like 5-6 or something. उससे भी ज़्यादा होगी. I didn't count. But जिस पे मैं ऐसा लिखती हूँ. I love to write. Okay. I love to write like poetries, my heart to heart talks to diary and all. So I love it. Like I have this diary. I brought this for myself. My father got this. Obviously, to these type of diaries as well. It's also from the office of my chote papa. So I honestly love writing. Okay, I have so many diaries. Like ये तो भी मैंने सिर्फ 3-4 दिखाई है. अभी मेरे पास I have total 10-11 diaries. I just love diaries. एक दो तो भर गई है, ठीक है. अब ना मैंने थोड़ा कम लिखना शुरू कर दिया. इट्स नॉट बिकॉज अब मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है. इट्स बिकॉज इट्स जस्ट दैट आई एम जस्ट नॉट एबल टू get a time to write. I just write in like my notes or in my practice copy के पीछे वाला पन्ना because that's all you have while you are overthinking while studying. ठीक है. कभी बार पढ़ते पढ़ते दिमाग में there is some thoughts that mix up and made a poetry about that, तो वो पीछे लिख ली. तो उस टाइप का. But my love for diaries will never get old. I have like diaries for the situations which can just define my condition at that moment, at that year or whatever. Like हर साल मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि I consistently write diary every day, every year, every month like that. No, I did not. But when I write just one time, it just defines my whole year. Just defines my whole year, what I am going through. Like I can understand. वो जब जिस दिन मैंने लिखा होगा ना वो पन्ना पढ़ते ही मेरे दिमाग में मेमोरी क्लिक हो जाएगी उस चीज़ की. तो आई जस्ट लव राइटिंग. सो आई हैव लाइक लॉट ऑफ डायरी एंड आई जस्ट लव टू राइट बिकॉज इट जस्ट बोलते हैं ना कभी कभार जैसे इमोशंस आर जस्ट पोर आउट. एंड वो पोर आउट होने चाहिए व्हेन यू आर इन टू द स्टेट ऑफ working hard and being disciplined instead of overthinking procrastination type shit. So it's important to be like pour out your emotions somewhere. So my way of pouring out the emotions is writing so that I can be just
myself. Sometimes when you feel heavy, just write. It will just pour out your emotions and you will just feel so peaceful at that moment. You will just feel so halka. You'll just feel that your heart is now lighter. That you are just तुमने अभी तक emotions अपने अंदर दबा के रखे थे and it just all pours out in the page. It's just so good. It's just so good. Just try it. You will definitely feel a peace of mind. So yeah, इट्स वेरी ग्रेट. मतलब मेरे को डायरीज, मतलब डायरीज के साथ ना मेरा एक अलग ही अफेक्शन है. बहुत ही ज़्यादा पसंद है मेरे को डायरीज. वॉज इन 8th क्लास आई स्टार्टेड राइटिंग. ओके. And after my online classes, I used to watch this show, and this show had the main lead who used to write poetries. Okay, so there I got my first ever idea of a poetry. I wrote it about my family members. I wrote it about my uh, छोटे पापा छोटी मम्मा. I wrote it about my dada dadi. I wrote it about my bua. I wrote it about like whole family. Like I have wrote about my every family member. Hannah, that's how my journey started. In ninth class, I used to like write something like you should work hard and in Hindi. I'm like a Hindi writer. Okay, वो हिंदी में लिखना काफ़ी पसंद है. मेरी हिंदी भी बहुत ही अच्छी थी. ठीक है, आई स्कोर लाइक 89 इन हिंदी इन 10th क्लास. मेरी बहुत ही अच्छी हिंदी थी एंड द रीज़न मेरी हिंदी इतनी अच्छी थी बिकॉज उस भाषा में ना मेरे इमोशंस जो है ना वो कविताओं के रूप में जो निकल के आते हैं. इट्स जस्ट सो रियल, है ना. इसलिए मैंने अपना पेज भी ओपन करा था इंस्टाग्राम पे, देवीशा राइट्स करके. इट्स जस्ट अ पेज. ओके, नथिंग एल्स. इट्स जस्ट लाइक अ पेज जिसमें मैं कभी कभार पोस्ट कर देती हूँ. दैट्स इट. एंड या ओके, सो देर आर लाइक न्यू ईयर की बिगनिंग्स पे ना हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं. टू मेक अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन, टू मेक अ विजन बोर्ड, टू मेक अ ईयर प्लानर and what not. And talking about me, I do not do that. It's not because I don't believe in it or something like that. It's just that I don't really have that type of manifestation wala thing. For me, manifestation is like writing and pouring your emotions out, feel happy every day. That's all I have a vision of. And about the career thing, I have a vision of career and it's feel थोड़ा weird in घर में भी. I don't know for some reason. तो उसके लिए diaries are the only one and diaries are the OGs. And किसी no one knows so much better about me rather than this diary. Yeah, diaries are just so good. Start writing, you will get to know that you will just feel lighter, you will just feel peaceful, and whatever, like you may be angry, you may be happy, you may be sad, you are about to like cry, but it just will make you feel lighter. Oh, I like my father only brought the calendar, and this is how it looks like. This is so good. So yeah, everything is just so good. Thinking about my tasks. So I am done with my semiconductor. Let me show you. My notes, ठीक है, इस टाइप से I did the semiconductor chapter. And yeah, ये chapter अब मेरा revision wise हो चुका है. All I have to do is to just practice some questions of this chapter and then this chapter will be revised. About optics, I still haven't started that chapter. Like wave optics और ray optics, ये दोनों chapter अभी भी मेरे रह रहे हैं. But I'll start it from tomorrow. Okay, I'll start wave optics from tomorrow क्योंकि wave optics is a slightly small chapter than ray optics. That's why. And या अब मैं इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी. बट उससे पहले आई एम थिंकिंग एटम और न्यूक्लियर भी रिवाइज कर लूँ क्योंकि उसके बाद क्या होगा ना, आई विल जस्ट प्रैक्टिस दिस 4-5 चैप्टर्स के क्वेश्चन एंड दिस विल बी बेटर. या टॉकिंग अबाउट टाइम, सो इट्स करेंटली कैसे it's currently 9 p.m. in the night and tomorrow we have to wake up early, so I'll go sleep by 12 a.m. today.
Okay, I'm just trying. Okay, so it's not like ki I will just sleep at 10:30 p.m. and will wake up at 4 or 5 a.m. It's not practically possible because I won't be able to sleep at that time because of my habit of waking up, sleeping late and waking up late. तो इसलिए आई डोंट हैव दिस टाइप ऑफ हैबिट कि अच्छा मैं अगर 10:30 बजे सो जाऊँगी क्योंकि मेरे को नींद ही नहीं आएगी एंड इट विल बी जस्ट अ वेस्ट ऑफ अ टाइम फॉर अ स्टूडेंट लाइक मी जो अभी भी बहुत जिसको अभी भी बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है और वो जाके एकदम 10:30 बजे लेट जाए और उसको कोई फ़ायदा भी नहीं है बिकॉज तब भी अगर वो 7-8 बजे उठ रहा है क्योंकि वो 10:30 से 11-12 बजे तक तो टाइम पास ही कर रहा है क्योंकि वो सिर्फ लेटा है उसे नींद नहीं आ रही. So yeah, I am going to sleep at 12 a.m. right now, most probably like 12 or 1 a.m. Okay, I'm not confirmed yet. जब भी मेरा काम हो जाएगा, जब भी मेरा टारगेट हो जाएगा, I'll sleep. Yeah, I'll wake up at 6 a.m. tomorrow or 5 a.m. I don't know. जब भी मेरी नींद खुलेगी मैं उठ जाऊँगी. I'll be like अलार्म लगा के जब भी मेरी नींद खुलेगी मैं उठ जाऊँगी. That's it. Video guys. सो मेरा जितना भी प्रोग्रेस हुआ है सिलेबस में इन दी 6-7 days यू कैन सी दैट. ओके, यू कैन जस्ट सी दैट मेरा कितना प्रोग्रेस हुआ है सिलेबस में. बायो में एक चैप्टर हो गया एंड ऑल्सो कल मैं बायोलॉजी स्टार्ट कर रही हूँ दोबारा. ओके, आज मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स पे फोकस कर रही थी. बायोलॉजी कल से स्टार्ट कर रही हूँ मैं दोबारा एंड आई विल जस्ट फोकस ऑन द न्यू चैप्टर एंड आई विल कंप्लीट दैट if I can, डिपेंडिंग ऑन द टारगेट एंड डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. बट या कल से मैं बायोलॉजी का भी नया चैप्टर शुरू कर रही हूँ. कल से मैं केमिस्ट्री के सैम्पल पेपर एकदम प्रॉपर सैम्पल पेपर शुरू कर रही हूँ एंड ऑल्सो फिजिक्स तो चलता ही रहेगा साथ में बिकॉज आई कैन नॉट लीव दैट क्योंकि उसमें छुट्टियाँ ही कम है. आई हैव लाइक 20 Feb को मेरा फिजिक्स का पेपर एंड फिजिकल का इट्स ऑन 18 Feb. टाइम देख रहे हो कितना कम है. जस्ट 1 day का गैप, जस्ट 1 day का गैप. इट्स सो लेस फॉर फिजिक्स एंड लास्ट टाइम की सिचुएशन तुम देख ही सकते हो. सो please that's it for today and this is my progress for today, day 6, sorry, day 7. And yeah, see you on day 8. Bye bye. 7 days of making a video and it's really hard to be consistent and to be posting video every day and to be progressing in studies every day because I'm not a student. I'm not a type of a student who just studies every day अच्छे से. But I'm trying क्योंकि it's not a time to waste. There's like very trending reel. It's really like very trending quote or a reel. You can say that the problem is you think that you have time, and it's I guess true because we don't have time. We don't. 44 days left, bro. We don't have time. So yeah, that's it. We'll meet you on day 8 and to be balling, you have to be all in. I've been thinking about myself today.